Dargah Home presents the News Hour at 9 with Arnab Goswami. Big victory, big story, big panel. On the one side tonight, Sophia Ashraf activist, Trisha Shetty, founder and CEO of She Says, an NGO. Dr. Zeenat Shaukat Ali, who's been with me as part of this campaign for a long time, has a big smile on her face. Congratulations to you. To you too. Dr. Zeenat Shaukat Ali, well, congratulations to you. And let your claps be heard resoundingly to everyone tonight, especially to Mufti Muhammad Manzoor Ziai, who lost today. Haar gaye. Haji Ali Dargah Trust, represented in the studio by Shoaib Memon, also lost today. Lost to public opinion, lost to reason, lost to law, lost to righteousness. Dr. Taslim Ahmad Rahmani, you should also now support all the activists. Rahul Ishwar should make a switch over to the right side at last. Dr. Imam Umar Ahmad Ilyasi, Chief Imam of the All India Imam Organizations, आपको आज celebrate करना चाहिए कि आपके religion के जो पुराने ख्यालात हैं, जो आपके रिलीजन के ख्यालात नहीं है, आपके अपने ख्यालात हैं, उनको चेंज किया जा रहा है, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। और इधर जो हमारे नौजवान हैं जिन्होंने इसके लिए कैंपेन किया है, सबको आपको कंग्रेचुलेट करना चाहिए। पंडित अजय गौतम is worried about the impact this is going to have on his form of intolerance which he spreads. Nikita Azad, happy to bleed campaigner. Vasundhara Pathak, Masoodi advocate, Supreme Court. Firoz Miti Borwala, national president of the Bharat Bachao Andolan, another very aggressive campaigner. Congratulations. And Trupti Desai, of course, chief of the Bhumata Rangragini Brigade, who has been leading the fight in Shani Shignapur, in many other places. Wonderful day. What did you say? You asking to me? No, I'm not asking. Today I was just introducing the guests. Okay. Continue. Thank you for your permission. My first question is to Mufti Muhammad Manzoor Ziai. मुफ्ती ज़ियाई, आपको मैंने कहा था जब हम इसको डिबेट कर रहे थे, आपने कहा कि कभी ये कोर्ट पारित नहीं करेगा, ये हो नहीं सकता, ये आपके रिलीजन का मामला है। आपने कहा कि रिलीजन इज़ अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स रखे गए थे, आपको याद होगा। आज कोर्ट ने आपको कह दिया है कि पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले फंडामेंटल राइट्स है, उसके बाद आप जो भी रिलीजन का इंटरप्रिटेशन करें, मगर उसके बाद है। इसलिए I want you to start today because this decision is momentous. Constitutional primacy is over discriminatory beliefs in other faiths, not just Islam, but all faiths. So first, आप आज सबको कंग्रेचुलेट करें जिन्होंने आपके खिलाफ कैंपेन किया है, उनको कंग्रेचुलेट करें और ये मान जाए प्रोग्राम में कि आपके जैसे पॉइंट ऑफ व्यू है जो पैट्रियार्कल, आउटडेटेड, एंटी वुमेन पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, ये अभी चलने वाले नहीं है। मुफ्ती ज़ियाई, राइट? या मुफ्ती ज़ियाई। अर्नब, सच बात ये है कि जो आपने मेहनतें की थी, आपकी मेहनतें सफल हो गई हैं। तो दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि जो मामला हमारे सामने आए हैं, मैंने तो इसे एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं किया है और इसके खिलाफ हमने स्टे भी ले लिया है। फायदा नहीं है और इंशाल्लाह तबारक व तआला सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली फायदा नहीं, नुकसान नहीं, वो डिबेट इज ओपन। नो, द डिबेट इज ओपन। दूसरी बात, डिबेट इज ओपन। फिरोज बेसिकली अब दूसरी बात सामने जब आप नहीं, एक मिनट फिरोज नहीं, वन सेकंड। पहली बात तो ये है द डिसीजन इज मोमेंटस, क्योंकि जो ये जजमेंट है इसकी इम्प्लीकेशंस है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस है। कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस आज के बाद नहीं हो सकती। आप जैसे कोई भी मुफ्ती, मौलवी, स्वामी, कोई भी अपने प्रैक्टिसेस को ये नहीं कह सकता है कि ये हम एंटी वुमेन प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हमारे रिलीजन ने इसको अलाउ किया है। डिबेट इज ओपन प्लीज। ये दूसरी तरीके से पेश किया गया है। ये गो अहेड प्लीज, ओपन द डिबेट इज ओपन। the point here is that the entire case of the Haji Ali Dargah was based on Article 26 of the Constitution, freedom to manage your own affairs. The freedom to manage your own religious affairs does not give you the freedom to discriminate and prohibit others from their equal right to practice and worship. Yeah. So the point is, Article 14, Article 15 and Article 21 have been upheld by the Bombay High Court. Yeah. And this is the momentous decision for all of democratic India, for all India's women and especially for Muslim women who have fought for this struggle, and all the women that have helped to make this
movement a success. Zina Chaukat Ali, is there any point, he seems to be confident that he's going to get this. Is there any point in his campaign, in his sort of appealing against that in a higher court? He's just going through the motions. No, is he likely to get any relief? No, I don't think that there's going to be any relief, because whatever the Honorable High Court has said is based absolutely on logic, and Islam does not contradict that logic. Yeah. It falls in line. There is no distinction between the rights that Islam is giving, and the Constitution is saying there is no contradiction there. And I feel that it is a simple, like they went to the High Court, I was almost sure that they were going to lose, and now that they're going to the Supreme Court, they have to go with this understanding that they're not going to win this case. Yeah. Because I think he's looking a bit shocked today. Yes, I tell you, because this is a historical judgment. Yeah. It is a huge leap. It's not a step. It's a huge leap for womankind. Yeah. And women are no longer second-class citizens who are going to be bullied and pushed around to be said what they have to be told and what not. No, sure. First of all, I want to just say one thing, that as far as the views of the trust are concerned, please do not accept anybody's statement that the matter will go to the Supreme Court. This is not a statement of the trust. I see. Now, the statement of a trust can come only from the mouth of the trustees who have not decided till now. So you're giving them congratulations. Wonderful. That's great. The trustees have not decided till now that whether they are going to approach the Supreme Court. That is one thing. Secondly, they have not, they have the entire matter, because none of the trustees' view has been taken. Okay, I am the lawyer for the trust. I have been told by the trust. Technicalities. But the only thing is that this matter, actually the main gist on the case law and on the pleadings has been missed. In Haji Ali Dargah, till the year 2012, the women were going to the tomb. They were entering the tomb. Yes. But what happened is that if we told the judges when the matter was being argued, that please you can come and inspect the position over there on Friday, Saturday, Sunday and Thursdays. So don't tell me whole argument. Okay. I'm not interested in knowing your argument. Please. I just want to know today. Watch Trisha. No, I'm not. No, 1 second, please, Feroz. No, watch. Sure. I know where you're going with this, because I've read your deplorable remarks, and I'm going to use the word deplorable. 1 second. Firstly, you've compared the women's rights in India to women's rights in Saudi Arabia. You're saying at least women in India are allowed to enter mosques. In Saudi Arabia, they're not even allowed to enter mosques. 1 second. You've said this verbatim. You've said this verbatim. You want to compare women's rights to women's rights in Saudi Arabia, where they're not allowed to drive, they're not allowed to swim, they're not allowed to open bank accounts without husband's permission. Please take your regressive views and take a back seat with that. I'm not used to two people speaking at a time. No, she's debunking and destroying your argument. No, so you let us Second point, going back to exactly what you said. We are not used to having men dictate terms to us either, and we don't want to be used to it. That is the premise of our argument. Go ahead. See, this is what generally goes on. What is the second argument? For women's safety. Nobody can understand for women's safety is the second argument. Is that it? You want to talk about women's safety, how their belongings are being stolen, how they're subject to eve teasing. Firstly, they're criminal offences. Take cognizance of the fact that it's a criminal offence. Punish the perpetrators of the crime. For eve teasing, it's 509 and 294. You're a lawyer as well, right? Punish the criminals. Do not punish women. Today you're starting with mosques. Tomorrow you'll tell women, don't take to streets. Oh, you're not safe. Don't take to streets. Men will get sexually aggressive and will attack you. And on the kind of regressive mentality that you want us women to live in? Why don't you, Trisha, tell her about the misogynistic things which were made part of the argument made here? No, what were the arguments which were made here? You said verbatim that women should not, at least women in India, are allowed to enter mosques. In Saudi Arabia, they're not even allowed to enter mosques. Second thing you've said is we haven't barred women. It is regulated for their safety. What safety are you talking about? It is not regulated for the safety. There was common entrance for the men and the women to go into the dargah. Okay, so you want to get a logistic person to provide different entrances? Please, either you speak or I speak. No, why are you getting intolerant with her? Sorry, go on. Either you speak or I speak. Or I just keep quiet. No, sorry, Shoaib. Listen, I see today in your face. I see today. No, there's nothing. There's nothing. I see today in your face a degree of intolerance. It's not intolerance. You are not used to a fairly well-informed young lady, and let me tell you, she too is a lawyer. She's destroying your argument on the program. I have not argued only anything. She is speaking, and both people are speaking. Please. So nothing goes on in that way. No, you want to read from the entire sheet? No, I don't want to read from the entire sheet. I just want 5 minutes. And whenever those 5 minutes are available, you please give it to me. I want 5 minutes, that's all. No, you want 5 minutes to yourself. No, I just want to say something which I am not being able to say because somebody else is speaking at the same time. That is not correct. So can I ask you a question? I'm here to make a speech.
No, I'm not here to make a speech. I want to put my view. I'm not used to this type of thing. Listen, I don't care what you're used to, sir. I don't care what you're used to. What has been ascertained today is the primacy of fundamental rights guaranteed under the Constitution of India by highlighting that this odd rule adopted by your trust running Haji Ali of denying entry to women in the sanctum sanctorum does not hold good because it is against the fundamental right to equality under Article 14, something which we here on the Newshour persistently speak about. There was no denial So please accept that fact. Begin by accepting that. There was no denial to entry. One second, Vasundhara Masudi also has to come. I'm sorry, but here on the Newshour, you have to take part in the debate. There was no denial of entry. Of course there was The fight is about the bazaar. Of course there was denial of entry. Second-grade citizens of women. Listen to me. Of course there was denial of entry. What I'm trying to say. Women are standing with the slippers are laid down. No. No, one second. There was denial of entry into the bazaar. One second. Yes, please. There was denial of entry to the bazaar. For them to enter the sancta sanctorium, and there was a jali built over there so that they could not go to this point further. Was there not a separate entrance created for them? Was there not a separate entrance? Why do you need a separate entrance? Why do you need a separate entrance? Because the people were jostling the women. The question. Let us. And what is the difference? What is the difference? There is only a difference of 3 feet. She's speaking. अभी मेरी बात आप सुनिए शोएब भाई. You see the point was this, the separate entrance का बात नहीं था. आपने एक जाली बना दिया कि बस men can go right up to there. जाली को हाथ लगा सकते, जरी को हाथ लगा सकते, लेकिन women cannot do that. Why? Why? Because you see the whole thing is that हजरत आयशा सिद्दीका जहाँ वो रहते थे वहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेरिड है, उनके राइट साइड पे हजरत अबू बकर है, उनके दूसरी साइड पे हजरत उमर है. तो सैंक्टा सैंक्टोरियम में जब उम्मुल मोमिनीन जो यू कॉल मदर ऑफ द बिलीवर्स वहाँ है जाते हैं, तो आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं कि दूसरी औरतें नहीं जा सकती? The whole argument. You apologize today for what you did. Why I should apologize? No, because I'm just telling something. No, you apologize for what you did. Vasundhara Masudi is also. I'm sorry. Here everybody is going to come. The whole argument is not right. You're not argument. Vasundhara Masudi. It is not a religious argument. Vasundhara Masudi is on the debate. This was a separate arrangement that was made for. Vasundhara Masudi is on the debate. Calm down. Vasundhara Masudi. Yeah. Vasundhara Masudi. Yes. Mr. Goswami, let me put it first and foremost that it's a great day for jubilation and celebration because it's a new beginning for an entire new world order for womanhood all across the country. And be it politics, economy or any sphere of life, it is now well established that they are not going to take women for granted anymore. So it's a it's a big and a monumental stamp on their unholy crusade against women. Coming to the entire case of Haji Ali, there were 2 major plank of attacks involved in this to defeat the PIL. First, that there were issues regarding the safety, security of women. Second, that under Article 26, women cannot have that. The trust is having the right to manage the affairs of the entire sanctum sanctorium and the entire area surrounding it, and therefore women can't claim it as a matter of right. Mr. Menon is there, he is a lawyer, must be aware of a judgment in Adi Vishweshwara versus State of UP, wherein Honorable Supreme Court has categorically, specifically made it clear that Article 26 is not having an overriding effect on Article 25. That is right to say. Absolutely. So you cannot intertwine or intermingle Article 26 with Article 25. Article 26 gives you the right to manage the affairs of the precisely. No. What the point? The point made here is, you see, the point made here is Vasundhara, if I may, Vasundhara. I have one question, please. No, Vasundhara, if I may. I have one question, sir. 1 second. I have one question. What you? Ms. Pathak, I have one question. What kind of benefits women are going to get after this judgment in respect of their education, in respect of their enhance their power, in respect of their economical growth? What kind of benefits you are going to get by this judgment? And this is the direct infiltration by the judiciary. No, 1 second. You be quiet. The question will be answered. This is a direct violation of. No, let her. The court will not decide what kind of month I have to chant when I perform the marriage of someone. That court will not going to decide which kind of mantras and rituals I have to perform in my religious places. This is decided by our Vedas and Purana, and it's deserved in our customary law. Then how can you break it out?
I find you question. What kind of benefits you are going to get after this judgment when you are purporting this cell? This is a winning of the women, and women are just the rights of the women they are deprived in this country. This is just a conspiracy to defame the. Is it a conspiracy? Then show me one religious scripture wherein women have been denied such kind of rights. Where I ask you, whenever I ask you to show me a religious scripture, whenever I ask you to give me a religious commandment to the effect, you will fail. The right to entry. May I please now? The right to entry, right to pray, deserve in every temple for the women. Mr. Ajay Gautam, shouting is not going to make you more effective, so just calm down. Okay, 1 second. Vasundhara Masoodi and Ajay Gautam, calm down. Ajay Gautam, don't speak over me. Ajay Gautam, don't speak over me. Last time I'm saying this. You think only you people know the law? The fact is today, और ये आप समझ जाइए कि मुफ्ती मोहम्मद ज़ियाई और इमाम उमर इलियासी जी, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आपके जो लॉयर्स इधर बैठे हुए हैं, इनको लॉ के बारे में कुछ नहीं पता। अगर इनको लॉ के बारे में पता होता तो वो कहते that even though religious faiths have a right to carry out their functions under Article 26, which is to manage freedom to manage religious affairs, it is not at the cost of violating an individual's fundamental rights. Imam Ziyai, you were infringing on the fundamental rights of women. Exactly. ये हिंदू औरतें हो या मुस्लिम औरतें हो, ये खड़े होके आपको चैलेंज कर रही हैं आज। ये खड़े होके हिंदू औरतें, मुस्लिम औरतें, सब, मैं कह रहा हूं इलियासी जी, सवाल आपको है, खड़े होके सवाल पूछ रहे हैं आपको। आपने 2 महीने पहले इसी प्रोग्राम में इतनी इंटॉलरेंस दिखाई थी, आपने इतनी कॉन्फिडेंस थी आपकी उस समय, आपकी और मुफ्ती मोहम्मद मंजूर ज़ियाई जी की भी, कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने डिसाइड कर लिया है कि हाजी अली दरगाह के अंदर कोई नहीं आएगा तो नहीं आएगा, और हम कहते रहेंगे भाई ये हमारे रिलीजन में कहा हुआ है। आज आप समझ रहे हैं कि नहीं, इमाम इलियासी जी की रिलीजन बाद में आती है, कॉन्स्टिट्यूशन पहले आती है। इतनी समझ आपको आ गई आज। अर्नब, अगर आप इतना समझ गए आज, अगर आप इतना समझ गए अर्नब, ये बिल्कुल आप इतना समझ जाइए। और मैं आपको बताना चाहूँ, नहीं, आप ये समझ जाइए कि आप ये धर्म के नाम पे आप लोगों, आप औरतों के खिलाफ इस तरह के डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, जो एक तरह से अपार्थाइड है, क्लास सिस्टम है, डिस्क्रिमिनेशन है, आप ये नहीं चला सकते। आपको बदलना होगा। आप समझ रहे हैं अर्नब, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप ये जान रहे हैं कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं से दबाने की कोशिश। अब ये मुसलमान एंगल मत डालिए इसमें। नहीं, व्हाट मुसलमान एंगल इन दिस? ये मुसलमान एंगल नहीं है, अर्नब, ये शरीयत का मामला है, इसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। और बिल्कुल हम इसको बिल्कुल हमने इसका अपोज किया है। कैसी बात कर रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं? एक मिनट, कैसी बात कर रहे हैं आप? और बिल्कुल पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है। वसुंधरा गलत रूप दे रहे हैं। मेरी बहन है, चर्चा को बेहद गलत और बेहद ही गलत रंग और रूप दे रहे हैं। हमारी बहन है, लेकिन याद रखें चर्चा का मौजूद धार्मिक, चर्चा का मौजूद धार्मिक बेशक है, मगर कसूदी एक धर्म या मजहब नहीं है। होगा कौम मुस्लिम बर्दाश्त नहीं करेगी इस चीज को। ये बात मुसलमानों की नहीं है मौलाना साहब, ये बात औरतों के अधिकारों की है, खातूनों के जायज हकूक की है। ये बात ये मसला सिर्फ एक मजहब से जुड़ा नहीं है, ये मसला सिर्फ एक मजहब से जुड़ा नहीं है, ये औरतों के अधिकारों की लड़ाई है। ये मुहिम खवातीन के हकूक की लड़ाई है। सरेआम लाना चाह रही हैं। शनि शिग्नापुर आपको याद नहीं है? शबरीमाला आपको याद नहीं है? शनि शिग्नापुर के साथ आपने नाइंसाफी की। शबरीमाला याद नहीं है? हिंदुस्तान की सकाफत का खून हो रहा है, हिंदुस्तान की तहजीब का खून हो रहा था। आज भी मैं ये कहूँगा हिंदुस्तान की सकाफत, आप सारी चर्चा को गलत रंग और रूप दे रहे हैं मौलाना साहब, आप चर्चा को गलत रंग और रूप दे रहे हैं। आप औरतों को मैं अगर इसको बिल्कुल सीधी तरह से बताऊं इसको, अगर आप बुरा न माने तो मैं डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी से एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, बहुत सम्मान के साथ आपको मैं कह रहा हूं इलियासी जी, बहुत सम्मान के साथ आपको मैं कह रहा हूं। भाई, पहले
कि आप ये समझ लें कि धर्म के नाम पर आप इस तरह का शोषण नहीं कर सकते औरतों पर, बिल्कुल नहीं कर सकते, शोषण नहीं कर सकते आप औरतों पर। भाई आप सुनेंगे, मैं सुन रहा हूं, आप भी मानिए। कुछ कह पाएंगे? जी आप बोलिए। ही तो सवाल करते हो, आप ही जवाब दे रहे हो, हमारी सुनोगे नहीं तो कैसे मालूम होगा? बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह की ये जंग हो रही है ना, ये जंग अच्छी बात नहीं है, अदब के दायरे में कोई बात होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपने कहा हार या जीत, ये हार या जीत नहीं है। बिल्कुल है, आप बिल्कुल है, निकाल लें कि हार या जीत नहीं। देखिए सुनिए, आप हमारी बात सुन लीजिए। देखिए, हमने आपको सुना, हमने आपको बहुत सुना, आप हमारी सुनिए। हार तो है, ये है कि ये जो मुकदमा है, अभी ट्रस्ट जो है इस पर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उस पर वो बात कर रहे हैं। जहां तक हमारी ये और आपको ये बता दूं, आपने एक बात कही कि इस्लाम के अंदर औरतों के साथ देखिए मौलाना साहब एक मिनट, देखिए औरतों के पूरे एक मिनट आपसे एक सवाल करूं, आप उसका आप जवाब सुनने दीजिए, बोलिए। लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। गो ऑन। ये पूछना चाहता हूं कि हर जगह का एक नियम होता है, हर जगह का एक कानून होता है। अब अगर कल को मैं अर्नब से ये पूछना चाहता हूं कि कल को तिरुपति के अंदर नॉन मुस्लिम नहीं जा सकते, जगन्नाथपुरी के अंदर नॉन मुस्लिम नहीं जाते, तो क्या वहां कानून हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वहां अपना कानून बनाएगा कि भाई वहां सारे लोग जाएंगे? आप मुझे ये जवाब दे दीजिए पहले। मैं आपको सिंपल सा एक सवाल पूछूंगा। ये भारत देश है, हिंदुस्तान, मेरा इंडिया। जवाब आप दीजिए पहले। ये एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आप सुनेंगे तो थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। ये भारत में ये शरिया चलता है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है? हमारे लिए दोनों ही चलते हैं। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। नहीं, शरिया डज नॉट मैटर मोर देन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कैनॉट। वो दोनों चीजें हमारे नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। व्हाई शुड मेन इंटरप्रेट एंड डिटरमिन व्हाट वुमेन ऑट टू वेयर व्हेन और नॉट दे वांट टू विजिट अ श्राइन? वुमेन आर द बेस्ट जज। औरतें डिसाइड करेंगी उनको कब जाना है, नहीं जाना है। आप कौन होते हैं? बहुत सम्मान के साथ पूछ रहा हूं, आप है कौन जो आप ये कहते हैं औरतें जा सकती है, नहीं जा सकती, इधर जाली देना पड़ेगा, इस तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे? देख सकती है नीचे। सोफिया अशरफ wants to say something to you. Sophia, would you like to say something? Yeah, one minute. आज 1 second. Sophia Ashraf आपको कुछ कहना चाहती? Go ahead, Sophia. Sir, you were mentioning that you cannot change rules of religion overnight. Your lawyer himself has mentioned that up until 2012, women were allowed to enter up till the sanctum sanctorum. Yes. So do not treat this as a religious conspiracy. We are not against religion. We are just trying to get our basic rights here. We are not trying to change your religion overnight. We're just getting access. And this is not religious. This is irreligious. My argument is that. Exactly. My argument is that till 2012 they were being allowed to enter as far as the men were going. Right. That is one thing. No, who are you to allow to enter? No, they were means. Who is they? We allow. Explain. No, they were going up to who is they? We allow. The women. They were going. No, who is they? The women were going up to the point where the men were going. That is just before the tomb. Just before the tomb means where the grave is there, where the grave of the saint is there. In 2011-12, there was some issue regarding what issue? Regarding some jostling of the woman. What issue? No, one second. What issue? What issue? No, you explain the issue. You can't avoid the issue. Yeah, explain the issue. What is the issue? There was some mishandling of the woman by the men in the crowd. No, one second. Just one question. 1 minute. Can I stop? Can I interrupt you right there? You said there was some what handling? Mishandling of the women. Pushing, jostling of women by men who are. So who should be punished? But the crowds are huge. No. If I sit here and I push you. Crowds are huge. No. One second. You punish the. Stop the men. Crowds are huge. Stop the men. No, one second. I think Nikita wants to come in. Nikita Azad from there. You can't say stop the men or stop the. No, I'm sorry. But what happened in that? There was some opinion of some. Can I say something? Can I say something? Who is to be held responsible for the incident that has happened? Yes, Nikita. Yeah, Nikita, go on. Yeah, who is to be held responsible for the incident that he has just said? Obviously, men are responsible for it. And the other thing that he said, it is not men's copyright
Their religion is not their copyright. Women are equal partners in making that religion, in developing that religion, and in changing that religion. And that is what we are doing. We are changing the religion. We will change the religion if it is discriminatory. It is a matter of 4 feet. If it does not, don't let she's when they were not allowed at all. Right to change the religion, and we will change it. We will change it overnight if it needs to change. Listen to me. Watch. Because this was one issue. Second is some people gave interpretation, we don't know who, that women cannot enter and touch the tomb of saints. What? On why? Because why? I'll tell the Muslim religious practice. Whenever some person dies in our house, some person dies in our house of a Muslim, the woman who's from the house is allowed to touch, but no outside woman is allowed to touch the dead body. That is what is the... No, what's it? Nikita is responding. 1 minute. And therefore... No, I'm asking, is it not the ground reality? No, I'm sorry, I can't get you. If it is not the ground reality, then why are so many women following it blindly? What are you proposing I'm not on that. I'm saying that there were 2 reasons. Mr. Memon, I would strongly suggest, and again with the greatest of respect, that you read the Indian Constitution. When you go back, you read Article 26, which confers upon a 1 minute, which confers upon a trust. The religion, if it is discriminatory. Precisely. It is. Shoaib, are you getting into a debate out there? Just wait a while, right? You don't want to listen to anyone but yourself. It's not good. Now, my question goes back here. I'll go into the technicalities. But Imam Ilyasi ji, आप इन औरतों को सुन रही हैं इधर? वो अभी रुकने वाले नहीं हैं. आप बात समझिए, जमाना बदल रहा है. अभी इनको फेथ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्नब जी, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए पहले. आपको मैंने सवाल किया था, आपने मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया है. पहले मेरा जवाब दीजिए. मैं आपको जवाब बिल्कुल सीधी तरह से दे रहा हूं कि जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर अलाउड है वो अलाउड है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर अलाउड नहीं है वो नहीं है. अगर कोई कहे हिंदू या मुस्लिम, जो था, अगर वो कहे क्वेश्चन को दबाने की कोशिश, अरे भाई कोई दबा नहीं रहा. आप सुन तो लीजिए जवाब. आप सुन तो लीजिए जवाब. आप ये हिंदू मुस्लिम इशू बनाने की कोशिश मत कीजिए. क्यों कह रहा हूं आपको मैं? आप तो धर्म पर, आप धर्म के धार्मिक है या नहीं है मुझे नहीं मालूम. आप इस्लाम के फेवर में खिलाफ है मुझे नहीं मालूम, मगर मैं ये सवाल आपसे किया है, इसका जवाब आपको इसी चैनल पे देना होगा. अच्छा, आप अगर 2 मिनट चुप हो जाए तो आपको जवाब 2 बार दे दूंगा आपको मैं. ठीक है? हमारे प्रोग्राम में और एक व्यक्ति है, राहुल ईश्वर. He is from Sabrimala Trust. 1 second, Rahul, calm down. He is from the Sabrimala Trust. Article 25. All kinds of Rahul, be quiet now. I'm responding to him. Yeah? All kinds of wrong religious practices are carried out by the Sabrimala Trust, which does not allow women of a certain age to enter the trust. We have challenged Sabrimala. We don't care. I don't care whether it's Hindu or Muslim. We have challenged Shani Shignapur. I don't care whether it's Hindu or Muslim. We have challenged what's wrong, what's going on in Haji Ali. I don't care whether it's Hindu or Muslim. All that I care about is Article 26 of the Indian Constitution and its correct interpretation, which confers upon a trust a fundamental right to manage its own affairs. But the Constitution guarantees the fundamental right of equality before the law. There is equality of gender. आप कुरान या हदीथ या कोई भी धार्मिक ग्रंथ दिखा के मुझे नहीं कह सकते कि जेंडर इक्वालिटी नहीं है. आप फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी गारंटीड टू एवरी मैन एंड वुमेन एज पर आर्टिकल 14, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. और इमाम इलियासी जी, आपको मैं कह रहा हूं, जो आप समझ ले आज कि जो समझदार है, आपको एक ही बात कहेंगे कि आप ये धर्म के नाम पे अपना कब्जा बनाने की कोशिश जो आप रख रहे हैं ना, ठेकेदारी एक तरह से, ये बंद कीजिए. इसको इस पर इतने सवाल खड़े हो जाएंगे, ये नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ठेकेदारी नहीं रही. आप कैसे धर्म ही बचाता है, बिल्कुल नहीं रहेगा. बचाता है आपकी धर्म ही जो है, आई थिंक सही रास्ता मार्गदर्शन देता है. अर्नब जी, आपको धार्मिक मौलाना साहब देखिए, इस्लाम की जब आप बात कर रहे हैं तो ये बताइए कि पहले वही किसको सुनाई दी? हजरत खदीजा को, जो सबसे पहले
पहले इस्लाम कबूल किया वो हजरत खतीजा थी, जो सबसे पहले बैटल ऑफ जमल में हाजिर हुए वो हजरत आयशा थी। वो सुनने दीजिए, औरतों के खिलाफ है, ना कोई मुसलमान, ना कोई जो खिदमत आप तो ये जो हजरत आयशा ने हदीसें जमा की है, तो आप लेडीज को क्यों पीछे कर रहे हैं? आप जो इस्लाम के बारे में, जो औरतों के बारे में जो आप इंप्रेशन दुनिया को दे रहे हो, अल्लाह को जवाब देना है आपको, वो जवाब देना है। ये गलत इंप्रेशन आप बंद कीजिए और ये बंद कर दीजिए कि इस्लाम ने ये नहीं अलाउ किया है। इस्लाम ने स्पिरिचुअल राइट्स पूरा दिया है इस्लाम ने, और वो सब जाहिर है, और आपको पता है कि वो सूरह नंबर 3 नो सिंपल पॉइंट इज व्हाट इज जजमेंट? आप ये नहीं कह सकते मौलाना साहब, इस्लाम को बीच में मत लाइए आप। नहीं, एक मिनट, पहले गलत बात मत कीजिए औरतों के बारे में। पहले तो आपको मैं एक बात कहूं, इमाम इलियासी जी, आप थोड़े रिस्पेक्ट के साथ बात करें जीनत शौकत अली जी के साथ। मैं आपको इतना तो कह सकता हूं, इस्लाम के बारे में आप उनको कह रहे हैं उनको तालीम की जरूरत है। मैं ये कहूंगा कि आप अगर उनसे थोड़ी देर बात करें, अगर नहीं बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बहन है तो पेट्रोनाइजिंग तरह से मत बोले। उनको इस्लाम के बारे में इतना पता होगा जितना आपको कभी पता नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, लगता है शायद आपको भी नहीं मालूम और इनको भी नहीं मालूम। नहीं, आपको कोई हक नहीं है ऐसे बात करने की। अपनी ठेकेदारी और साहब अभी एक ही बात बोल रही है। आई वांट टू से नहीं, दूसरी बात, सो आई प्लेस इट ऑन रिकॉर्ड। ये अल्लाह, ईश्वर, गॉड, एनीवन, राइट, सब भगवान के बंदे हैं। आप जैसे लोग जो इधर आके कहते हैं ना कि हमारा कब्जा है, कब्जा नहीं हो सकता आपका। ये आपके कैसे ख्याल है कि आप भगवान पर कब्जा डालने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल। भगवान के घर पर आप ठेकेदारी रखने की बात कर रहे हैं। आप अपने ख्यालात को सोचे, आप कैसे बात कर रहे हैं आज। आपको लगता है कि आजकल के जो नौजवान है वो सवाल नहीं खड़े करेंगे आपके ऊपर? क्या पंडित गजे और गौतम के ऊपर सवाल का जवाब दीजिए। अरे आपको 1000 बार सवाल का जवाब, आप तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी आप डाइवर्ट कर गए मुझे, तो आपको जवाब देना होगा। ये जवाब है, बताइए क्या है? ये मैं तो अरे अजय गौतम लग रहे हैं, अजय गौतम ऑन द लेफ्ट। ठेकेदारी on women by denying their rights, equal rights to women. You want to establish your ठेकेदारी? अल्लाह डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, आप लोग करते हो। Exactly what you people have done in the past when it was with regards to sati, when it was with regards to widow remarriage. Every time you wanted to subjugate, suppress and isolate women, you took up the tool of religion in your hand and denied. Okay, Rahul Ishwar, why shouting? Article 26. How can you ignore other articles of the Indian Constitution? You want to protect religion. Article 40. All I'm saying is God has not given you a contract. In our sentence, deny that you did. Pandit Ajay Gautam. Deny that you did not force women. Can I please? I just want to point out, viewers. Can I have Ajay Gautam? One second. The point to be noted, viewers, at this point of time is Ajay Gautam, calm down. The point to be noted at this point of time is the coming together of Hindu and Muslim patriarchal forces. Exactly. Same forces. Pandit Ajay Gautam is as insecure of enlightened women. You also have a problem in we coming together. No, I don't have a problem with your coming together. I'm making an observation. You have a problem with my observation. Getting exposed. Is that not the issue here today? No, the point is, and Rahul Ishwar. You have a problem. You have a problem with secularism. No, you don't have a problem. You have It's a good you all are problem getting with communal exposed. harmony. It's good that the right wing is coming together. It's good all the patriarchal forces are coming together. And today this entire judgment has blown apart this entire Pandit Mullah lobby has now been challenged by women and people across the country. You all have ended. Today this judgment has ended your takedari over our religion, over our God, over our deities. Article 25. Exactly. Our fight is let me say very clearly tonight. No, 1 second, stop. Let me say very clearly tonight. And ignoring all other articles of Indian Constitution. Let me say very clearly tonight. Very clearly, right?
to Imam Umar Ahmad Ilyasi. There is a new generation that is coming up in this country. This new generation thinks differently. And I don't know why the Imam, if I can have him on the left, felt he asked me a very complicated question. Can I just tell you, sir, Imam Islami, now you just open your ears and listen to me clearly. I am saying, if a Muslim wants to worship in Tirupati, why should he be stopped? That's it. If a Hindu wishes to visit a mosque, if a Muslim wishes to enter a temple, he should not be stopped. It's a question of faith. It's a question of faith. You are not able to understand the changing views of this. आपका क्वेश्चन ही रिडिकुलस है। दरगाह और तिरुपति मंदिर को कंपेयर करना, मुस्लिम और हिंदू औरतें जो दरगाह आनी चाहती है, उसको तिरुपति में कोई मुस्लिम जाना चाहिए, वो आपका क्वेश्चन आपने जो पूछा है, उस क्वेश्चन में कोई बुनियादी नहीं। पहली बात बिल्कुल सही बात है। उसके साथ ये बात कि जो आज जो माहौल देश में बना है, जहां अलग अलग धर्म के लोग आज साथ में आकर रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, भारतीय समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, आप और ये पंडित और मौलाना को बर्दाश्त नहीं होगा और हमको वो पड़ी ही नहीं है। आप लोग मस्जिदों का क्या हाल किया है, आपने मुस्लिम समाज का क्या हाल किया है, वो हम सबको पता है। पूरा मुस्लिम समाज ने आपको मस्जिद मस्जिद तक बांट लिया है। आप लोग की औकात पूरे समाज में खत्म हो चुकी है, वो आप रियलाइज कर चुके। मौलाना साहब, मस्जिद की लड़ाई नहीं हो रही है। अरे हो रही है मौलाना साहब, आप लोग ही करवा रहे हैं। You are the ones who have divided the entire community। एक दूसरे को काफिर बोलते हैं आप लोग। आपने मजाक बना दिया पूरे समाज को। मुकदमा लड़ने के लिए क्या मौलाना साहब पूरे समाज को मजाक बना दिया है। आप लोग का समाज में आप लोग का मजाक बन चुका है। My point is today, the law of the land. Our High Court has interpreted certain things. Let us respect that. Okay. Let us respect that. Nikita Azad is saying something to you. Yes, Nikita Azad is saying something to the Maulana. I just want to say one thing that Nikita Azad is saying something to Mr. Ilyasi. Go on. Yes, why are you using all the discrimination that Muslim community has faced? You are defaming your own community. You are using it here by placing this argument that Muslim community has faced this and this. I acknowledge that it has faced, and we can debate on it in another debate. And I do stand with all the Muslim women who have faced discrimination at times at the hand of criminal forces in this country. But this is not the time to debate it. And secondly, my only question, which I will speak both in English and Hindi, that क्या कोई धर्म ना बराबरी पर खड़ा हो सकता है, खड़ा रह सकता है, उसे खड़ा होने देना चाहिए? Should any religion be allowed to stand on discriminatory grounds that discriminates between fellow humans, that discriminates between men and women, between one caste and another, between one class and another? ऐसा कोई धर्म, क्या सब धर्म के जो यहाँ ठेकेदार बैठे हैं, who have had copyrights of their religions? वो कह रहे हैं मिस्टर इलियासी की ठेकेदार हैं। A religion should discriminate. That is what is the meaning of religion. Do you propose it? Do you say that this is the meaning of religion? Instead of deriving hope from religion, what we are doing today, we are devoiding people of hope. हम उनसे उनकी उम्मीद छीन रहे हैं कि धर्म उन्हें कुछ दे सकता है, उन्हें कुछ सिखा सकता है. We are teaching women that get out of the temples and mosques. You are not allowed here. You are not wanted in our religion. That is what we are doing, and that is why we are fighting against the very essence of these religions, which is patriarchal. When the essence becomes patriarchal, we have to change it, and we will change it no matter what happens. Of course, we are changing in the first step. This is only a first step. And a lot more is about to change. The problem is whether people like Mufti Ziai or Imam Ilyasi accept the change or not. Now, in this case, all I'll say to you, Mufti Ziai, that आप program पे आए थे, आपने सोचा था कभी चेंज नहीं होगा. आज से 4 महीने पहले की बात सोची. अगर 4 महीने पहले कोई आपको कहता कि 4 महीने बाद लोग फोर्स करके लॉ के थ्रू लीगली आएंगे, हाजी अली दरगाह के अंदर घुसेंगे, औरतें जाएंगी जैसे जाती थी, कोई रोक नहीं सकता. आप कोई नहीं है रोकने वाले. और इलियासी जी जो कहते हैं कि हम ठेकेदार हैं, यही तो माइंडसेट है जिसके खिलाफ ये सब औरतें खड़ी हो चुकी हैं. आज आपको कोई ठेकेदारी नहीं है. खड़ी होना या ना होना इस बात की शहादत. Don't diversify the issue. He's backtracking, sidetracking the issue. आप एक की कब्जादारी हटा के दूसरे की कब्जादारी करवाना चाहते हैं मिस्टर अर्नब. एक की कब्जादारी हटा के दूसरे की कब्जादारी करवाना चाहते हैं. मैं आपको बताना चाहता हूं किसकी कब्जादारी. ये एक हिंदुस्तान जो है उस जानिब बढ़ रहा है. वन नेशन वन लॉ की जो बात आपने की है, उस जानिब आप हिंदुस्तान को ले जा रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान के संस्कृति के लिए, हिंदुस्तान की तमाम होगा. और आने सभी कलेक्टिवली गवान करें.
खमियाजे होंगे वो आपके सामने होंगे। मैं इतना बताना चाहूंगा कि इस्लामी मसाइल के साथ जब भी छेड़छाड़ होगी, आवाज बुलंद होगी, इस्लाम किसी चीज को इस्लाम के साथ छेड़छाड़ आप कर रहे हैं मौलाना साहब। Let her speak. Yeah, go on. Trisha, 1 second. Trisha, speak. Trisha, go ahead. Trisha. Maulana, you're clearly trying to Only Trisha is the Maulana. You're clearly trying to obfuscate the issue. If I may speak. Only Trisha. If I may speak, you are clearly trying to obfuscate this issue and make it a Hindu-Muslim issue. It is not. You are extending blatant discrimination on grounds of gender alone. This is about women's rights. And to Ajay Gautam, who says, what do you women want? I have clear vested interest. I want to be treated as an equal citizen in India. That is what I want. We are tired of men using religion, using women's safety, such excuses to put restrictions on us women. This is clearly a gender issue. Do not make it a Hindu-Muslim issue. Absolutely. You are pretending like Islam is under attack. No, we women are under attack and we are tired of it. बन जाती है कि हम शरीयत की बात आपको बता दें। No, you do not make it a शरीयत की बात। Let us speak. So, Sophia, go on. यहाँ पर दरगाह के अंदर में औरतों के जाने के मामले में दरगाह अजमेर में नहीं करते हैं क्या? मदीना they don't allow women. 12 out of 19 दरगाहs in India allow women to enter. What logic are you talking about? What is that? अजमेर में अलाउड नहीं है women को एंट्री, मदीना में अलाउड नहीं है women को एंट्री, 12 out of 19 दरगाह से अलाउड एंट्री नहीं मिला होता जो इसके के साथ हम आज हैं। हाजी अली जो गुंडा राज है वो लोग एक्सरसाइज राइट एज योर चूज। कोई माइंडसेट नहीं है। आपको बताना चाहूंगा कि फिरोज साहब से हमें इस्लाम सीखने की जरूरत नहीं है। आप तो पहली बात है, आपको पहली बात है, सुनिए आप सुनिए गौर से सुनिए। ये ट्रेडिशन माइंडसेट ये एकदम रबिश आर्ग्यूमेंट है जो आप और ये राहुल ईश्वर हमेशा देते रहते हैं। क्या ट्रेडिशन, क्या माइंडसेट की बात कह रहे हैं आप? और आपको ये कहूं, अगर काबा में, मक्का में मेन एंड वुमेन आर अलाउड टू एक्सरसाइज रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ हज एंड उमरा, देन मेन एंड वुमेन और हाजी अली में फर्क है। अच्छा एक सुनिए कौन सा फर्क है? हाजी अली दरगाह और अजमेर की बात करो। अगर अल्लाह की इबादत होती है। अरे अजमेर और हाजी अली दरगाह की बात करो, इस चीज को दुनिया के अजमेर शरीफ की बात करो। माध्यम से पेश करना चाहता हूँ कि वो अल्लाह का घर है और ये बंदे का घर। अरे अजमेर शरीफ की तो बात कीजिए और आपको भी समझना चाहिए आपके आप बेकार में बेकार इनको लोगों को बुलाना बंद करो यार। एक मिनट रुकिए फिरोज जी, आप बेकार में वर्कअप हो रहे हैं। आप सुनिए लॉजिकली, एक मिनट मैं आपके नर्वसनेस को बिल्कुल समझ सकता हूं क्योंकि आपको लग रहा है आप सबसे बड़े स्कॉलर हो गई हैं। मुफ्ती जियाई जी, एक मिनट प्लीज मुफ्ती जियाई देखिए, जिसको ये पता नहीं वो हमें कुरान बताएंगे। अरे मुफ्ती जियाई रिलैक्स, नो रिलैक्स, लंबी सांस लीजिए। डॉक्टर जीनत वो हमें इस्लाम बताएंगे, हमें डॉक्टर जीनत से इस्लाम सीखने की जरूरत है। हो सकता है तो आपसे हम क्यों सीखे? हो सकता है कि कुरान ज़ुहरी ने भी सीखा था औरत से। खत्म हो चुके हैं मौलाना साहब, खत्म हो चुका है, वो दिन आपके गए। इमाम ज़ुहरी ने एक लेडी स्कॉलर से सीखा था, बहुत सारी वीमेन स्कॉलर है जो मर्दों को सिखाई है। तो इसको ये तो इस्लाम आपसे तो नहीं सीख सकते, आपसे कोई नहीं सीख सकता। मैं तो बहुत छोटी स्कॉलर हूँ, आप तो मुझसे कुछ सीख नहीं सकते मौलाना साहब। ब्रेक लेके वापस के सामने क्या सामने हो रही है? नहीं, ये सब बात आप कर रहे हो, अल्लाह को बीच में मत लाओ। ये आपके दिमाग की बातें और अल्लाह की बातें दोनों अलग बातें। Okay, we'll take a break and come back. अल्लाह डिस्क्रिमिनेट नहीं है, अल्लाह औरतों को नीचे नहीं दिखाया, रसूल ने औरतों को पोजीशन दिया है जो आप सुनिए, we'll take a break. Now listen to me. आप मुल्क को इस्लाम मत सिखाइए। Listen to me. 1 second. मुफ्ती जी आप मुल्क को मत सिखाइए प्लीज। हाथ जोड़ती हूँ आपको। मुफ्ती जी 1 second. Shoaib, but I have to take a break. I have to take a break at this point. But I'll just say this to you, that in Ajmer Sharif Dargah, which is of the revered Saint Khwaja Moinuddin Chishti, women are allowed access to the sanctum sanctorum. I don't know why it can't be allowed at Haji Ali Absolutely. or at Sabrimala. Absolutely. 12 out of 19 dargahs allowed. When we come back, we'll have you debating with Rahul Ishwar on what really constitutes tradition and what is not. I think the question is of Rahul. When I come back on the other side, I'm going to start with you, Rahul Ishwar, and we are going to debunk this whole idea of what constitutes tradition and what constitutes right. And all I'd say today to all those who say that we are takedars of religion is that your time is gone. Start rethinking where you stood earlier. Back in a couple of minutes. Yeah.
Your Home presents the News Hour at 10 with Arnab Goswami. तृप्ति देसाई, ये राहुल ईश्वर आपसे इतना डरते क्यों हैं? आपने शनि शिंगणापुर में कैंपेन किया। तृप्ति देसाई जी, ये राहुल ईश्वर जैसे लोग आपसे इतना डरते क्यों हैं? ये सबरीमाला टेंपल में वो कोशिश अभी भी कर रहे हैं कि वहां पे औरतें कुछ भी हो मगर वहां पे औरतें नहीं जाए। जी 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 नहीं, हमें लगता है इनका जो डर है ये इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये महिलाओं का जो हक और अधिकार छीना जाता था, ये पुरुष प्रधान जो संस्कृति है वो जो आगे ये ला रहे थे वो कहीं ना कहीं अभी पीछे जा रही है। उसके लिए हम जो आगे जितनी भी महिलाएं आ रही है वो एग्रेसिव है, वो कहीं भी पीछे नहीं हट रही है। उनको धमकियां मिले या उनके ऊपर हमले हो, कहीं भी पीछे नहीं हट रहे। तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक है कि ये जो लोग हैं वो हमसे डरे। और हमें लगता है कि आज जो निर्णय हाईकोर्ट ने दिया हुआ है ये बहुत बड़ा, जो विरोध कर रहे थे लोग, इनको बहुत बड़ा करारा जवाब जो है वो हाईकोर्ट ने दिया हुआ है। और ये हाईकोर्ट ये विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, हमें लगता है संविधान का ही पालन होगा, महिलाओं के बाजू से ही। इनफैक्ट आई फील को जो महिलाओं के ऊपर जो अन्याय हो रहा है वो उसके ऊपर ही न्याय देने की भावना ही सुप्रीम कोर्ट भी रखेगा। यस राहुल ईश्वर, व्हाट आर यू होल्डिंग अप? टाइम्स नाउ का और अर्नब सर, mother and grandmother to Sabarimala every year. I go with my grandmother and mother to Sabarimala every year. A simple Google search will let you know that lakhs of people, lakhs of women visit Sabarimala every year. Where is the female discrimination? It is only age regulation. But you want to portray it as female discrimination because you are running an agenda. Lakhs, not even thousands, lakhs of women visit Sabarimala. But only age regulation is there. Don't you have age regulations for Supreme Court judges? Don't you have age regulations for President of India? Don't you have age regulations for getting into the army? There is only age regulations. But you purposefully want to portray it as female discrimination because there is a clever cut agenda at work. Rahul, like you, your laptop went on standby mode. Now everyone's laughing at you, Rahul. Do you know that? Everyone's laughing at you here today. Machines can make error, man doesn't. Human intelligence can overcome. And if you can tell your cameraman, one second, if you think it has gone to standby mode. Okay. You speak about age regulation on women. Is there an age regulation on men? Exactly. That is where discrimination comes, and that's what we're trying to say. There is only age regulation, Baba. Lakhs of women visit Sabarimala. 1 second, I can hear two people at a time. And can I point out one thing? For what reason? For what reason, Baba? Right-wing constitution. For what reason, Baba? Uniform civil code. You tell me. For what reason is there age? One second, Rahul Ishwar, I'll ask you a straight question. You won't like it. Rahul Ishwar, you are a man. This one question and it will end the debate. Why is there the age regulation? Yeah. Why is there this age regulation? Why? Spell it out. Because there is a Sabarimala for women where men also have regulations. Where there are pujas for pregnancy. Should I go for those pujas and do the puja in the name of Article 14? There is pujas for period. Should I go and do the pujas for period? Because there is Article 14. It's a very narrow understand issues with nuance. Please understand issues with depth. There is a lady Sabarimala. If men want tomorrow to, you will definitely say you need females in Indian cricket team. If men even run a campaign that she should play along with Virat Kohli in Indian cricket team. Nobody is going to stop them. It is your freedom. And men are not discriminated against because they menstruate. Women are discriminated because they menstruate. Do you understand the reason? Do you understand they are discriminated because there is no menstruation angle. You are lying. You are purposefully lying. That is the reason that you have been giving me are not the reason. Debate. You are purposefully lying. The reason to you have been paint us giving bad. That is periods are not the reason. We have told this in court. You are purposefully lying. I want people of India to understand this is a purposeful lie perpetuated, propagated so that they can demean us. This is a clever lie so that you can play victim. Rahul, you are the one who make rules. The oppressed. Men this make is rules. a
purposeful lie. We are the victims. Why are you behaving in a hysterical way? Why are you? I want to know a simple question from you, Rahul. Rahul, listen, don't be hysterical. Rahul, listen. Rahul, this is very strange. You are exhibiting strange behavior, and many people want to take you on. Tripti Desai, 1 minute. One simple question I have for you. You are a man of reproductive age. There are women of reproductive age. As a man of reproductive age, can you tell me why you are not impure between the age of 10 and 50? Simple. I can equally say you are terribly impure. You have reproductive organs. Stop it! Don't disturb me when I'm telling you something. You have reproductive organs. This is a lie. You have a reproductive system. You are a man of reproductive age. You are terribly impure. If I say that a person like you are the symbol of impurity. How can a symbol of impurity, a man of reproductive age, be allowed to go wherever he wants? Please stop going to the Sabrimala temple from tomorrow. This is a lie. This is your argument. This is not our argument. This is a planned lie because you want to defeat us in court. This is not our argument. We have never raised this argument anywhere. This is a lie you perpetuate because you want to demean us. Our Nikita is back on the debate. Nikita, Tripti Desai. 1 second, Nikita and Tripti Desai are back on the debate. Tripti Desai and Tripti Desai, Nikita will put Rahul in the middle. Have you read the interview of Prayer Gopalakrishnan which says that if women enter Sabrimala, it will be a catastrophe? Exactly. Have you read his statement? If you read his statement, he says that if women enter the temple, it will be a catastrophe. Men will get deviated from what they are doing. That is what his statements were. Because women menstruate. Because women are reproductive age. We never said. That is what his statement. Don't put words in our mouth. I think you need to come in. Please, I would like Shreya is on the debate. Shreya is on as well. Don't put words in our mouth. Please don't play victim. You are the aggressor. We are the victims. How dare you? What's wrong, Shreya? We are the oppressed. Don't open your mouth. How dare you? Does the sight of a woman speaking up for her rights offend you that much? He actually said that. Yes, he did. Does the sight of a woman speaking up for her rights offend you that much? It doesn't suit you. Why don't you keep quiet and let others speak? It doesn't suit you. My God, this is incredible. Clearly, your validation is not what I am seeking. Also, what religion do you stand for? You have categorically put out a tweet asking other women to forcefully stop women who are entering temples and said that you will bear court case expenses. Is that the religion of peace you stand for? Who has anointed you as the custodian of Hinduism? And your attack, let's call it as it is. You are attacking menstruating women. You are attacking menstruating women. By extension, you are attacking the very essence of a woman. Rather than fighting for temples. What? I'm sorry? Please have the courtesy to go to a tantric temples. We are not Vedics. We are tantrics. We follow the tantric tradition. Please come. Well, I'll tell you what I follow. I follow the Indian Constitution. I'll tell you what I follow. I follow the Indian Constitution. I do not follow what men like you opine over. Because clearly you all are just obsessed with suppressing women. And the idea of a woman speaking up for her rights and demanding equal rights offends you terribly. And excuse me if I reject every patriarchal notion drama. and crude says that drama. you throw out saying, oh my God, you all are attacking us. We're not attacking you. The only people who should feel attacked are the ones who systematically oppress women. You want to portray it as female discrimination. No. Of course it is. This is clear discrimination on grounds of gender. Of course it is. If you do not allow a menstruating woman to enter the temple, this is clear discrimination. You can try fighting with Dhoni and Virat Kohli for that. For what? Arnab Goswamiji will help you to. How ridiculous? Dhoni and Virat Kohli for what? How ridiculous is this? You know what? One second. You're sounding more ridiculous every minute. This is the same Next he'll say. You know what he's going to say next. Next, you know what he's going to say next. Sounds equally ridiculous to us. Your argument is beyond ridiculous because I think you will next start demanding the return of sati. You will say, people like you will say,
We want sati back. Please don't use this sati argument forever. I will use this sati argument because you believe. I will use the sati argument because you believe that beliefs should remain static. I believe beliefs should not remain static. Beliefs should evolve with time and be consistent with modernity. The belief that you have, and don't shout over me now. I heard you. The belief that you have that a deity or a god will get distracted, or the celibacy of a deity will get affected or disturbed because an 11-year-old child or a 49-year-old or 50-year-old woman will appear before him, cannot anymore remain a basis for restricting the entry of women from your temple. And let me say it to you, women will enter. Women of all ages will enter the Sabrimala shrine, just as women of all ages will enter the Haji Ali shrine. You are nobody to stop them. You don't own God. You don't own the house of God. You don't own access to God. You will not be an obstruction between women and their God. You don't own God. And religious justification, what damn religious justification are you talking about? Religious justification has been misused in the past. Religious justification. Religious justification has been misused in the past to justify caste discrimination. One second. Religious discrimination, religious justification is used to stop the entry of Dalits to temples. You will now say, we stop Dalits from entering temples. You will say, let's bring back caste discrimination. We never had Dalit discrimination. Well, we have had Dalit discrimination. You are nobody to sustain this country. We have an Islamic shrine inside our temple. That is our secularism. Then remember this. We have an Islamic shrine inside our temple. Anywhere in India. That is the proud secularism we have. एक मिनट, तृप्ति देसाई आप देख रहे हैं ये कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? हिस्टेरिकल हो गए हैं, हिस्टेरिकल हो गए, आज अपने आप को रोक नहीं पा रहे, बहुत डर रहे हैं। हेलो, आप कुछ कहना चाहेंगे राहुल ईश्वर जी को? It's a pain of the victim. बिल्कुल, आज की जो राहुल ईश्वर, लिसन टू तृप्ति देसाई। और मुझे सभी को कहना है कि शबरीमाला मंदिर में अगर 10 साल से पहले या 50 साल के बाद की महिलाएं चलती है तो बीच में क्यों महिलाओं को अपवित्र माना जा रहा है? हमें तो लगता है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। महिलाओं को अपवित्र माना जाता है, महिलाओं को वहां पे छोड़ा नहीं जाता है और वो छोड़ते भी नहीं है। मतलब इनको कहीं ना कहीं किसी का जो है वो सपोर्ट है। ये जो पुरुषी मानसिकता वाले जो लोग हैं, ये धर्म को बीच में लाते हैं। ये धर्म की लड़ाई कभी नहीं थी, ये महिलाओं की लड़ाई है और महिलाओं की लड़ाई रास्ते पे आई है। महिलाएं जीत रही है, महिलाओं को जो है वो हक और अधिकार मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं इनको सहन नहीं हो रहा है। इसके लिए जो one humble request. I dare you to file a FIR against me. I'm challenging you in national media. If you have got support, if you have got conviction, please try to file a FIR against me rather than mere words. Show it in your action. I dare you to file a FIR. Let me see. What kind of a child? What kind of a child is that? FIR इसके ऊपर क्या? जहाँ पे महिलाओं को अपवित्र माना जाता है, भेदभाव किया जाता है, वर्णभेद किया जाता है, इसके आगे सरकार के खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए, हमने नहीं करनी चाहिए। तृप्ति जी, ये आपका वादगदी है, ये हमारा नहीं। आप ये कहते हैं कि क्योंकि आप हमें डीलिंग करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा साइड को वीकन करना चाहता है। हमारा आर्गुमेंट, एक लेडी शबरीमला है वहां, महिलाओं के मैं समझ नहीं पा रहा है और ये बिल्कुल हम नहीं मैं बात समझ नहीं पा रहा। नहीं वन सेकंड, मैं ये लॉजिक अरे काम नहीं। अच्छा मिस्टर राहुल ईश्वर, पहले आई टेक डीप ब्रेथ, लंबी सांस, take a lambi सांस, take a deep breath and relax. The question I have for you is, if a god is not distracted by the presence of a 30-year-old woman or a 40-year-old woman or a 45-year-old woman or an 11-year-old child in Mathura, right? Then why would the god be distracted in Sabrimala? There is no logic to your question. The only thing that you have today, point number one. Point number two. Just one line. No, you will not respond to one line. I have not given you the response. To see God. I have not. You don't go to temple to see God. Oh. You go to see the deity. What do you know? Deity is different from God. You don't understand the difference between deity and God. Listen, there are two different concepts. Listen. I'll tell you one thing. Who are you to teach me what I go to a temple for? I may go to temple for a spiritual experience. I may just go to a temple
to feel the presence of the Almighty. I may go to a temple to experience the truth within myself. And Rahul Ishwar, you are such a shallow man. You are not understanding the depth of the argument that I am putting before you. Women have occupied an exalted place, be it in the knowledge of the Vedas or their contribution to the evolution of Hindu philosophy. You, unfortunately, I am saying this to you on national television, you have no understanding of Hindu philosophy. All you feel, you and Imam Umar Ilyasi and Mufti Muhammad Manzoor Ziai, all you people believe is that unless you are able, all you people believe is that your thekedari of religion will go. Who are you? Did God come and tell you that you are my chosen one? Did God come and tell Imam Ilyasi that you are my chosen one, not any of the women here on the panel? मिलना चाहिए और ट्रस्टियों ने खुद देना चाहिए. Now Taslim Rahmani, is there any point fighting? What would your advice be, Taslim Rahmani, to Imam Ilyasi of the Imam organizations or Mufti Ziai? आप सिर्फ 40 सेकंड मुझे सिर्फ 40 सेकंड चाहिए, अगर अनइंटरप्टेड मिल जाए. मैं इन दोनों हजरात से ये बात कहना चाहता हूँ. बोलिए. एक शेर है अल्लामा इकबाल का, इनको सुनाना चाहता हूँ. सुनाइए. वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर, क्योंकि किसी भी मजहबी इबादत गाह में, किसी भी दरगाह में, किसी भी जगह पर कुरान ने और हदीस ने औरतों को नहीं रोका. ये हाजी का रजिस्ट्रेशन का ट्रस्ट का अपना डिसीजन है, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है. कोई और मुझे शर्मिंदा हूँ, इस बात पे शर्मिंदा हूँ, मैं इस बात पे शर्मिंदा हूँ कि हम ये कहते हैं कि अदालतों को शरीयत का फैसला नहीं करना चाहिए, मगर इस किस्म के लोग अदालतों को मौका दे रहे हैं कि मुदाखलत करके बेकसूर मुसलमानों को हक दिलवाए, औरतों को उनका हक दिलवाए. जो हमें देना चाहिए था, जो इन्हें देना चाहिए था, इन्होंने उसको रोका और अदालतों ने उसको दिलवाया. अगर आज अच्छा फैसला किया है, कल यही अदालतें गलत फैसला भी कर सकती है. जिम्मेदार आप होंगे और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड होगा, उलमा होगा, जिन्होंने इस्लाम का कोडिफिकेशन लॉ का नहीं किया है अभी तक. गलत तरीके से मिस्टर रहमानी, गलत तरीके से आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत तरीके से. एज अ जिम्मेदार मुफ्ती होने के नाते मैं आपको बता दूं, कुरान और हदीस में आप साबित कीजिए, आप कुरान की बात कीजिए, मुफ्ती साहब कुरान की बात कीजिए, कुरान से दलील दीजिए. वो एब्सर्ड दलील है जो आपने अदालत में दी है, उनकी बात मत कीजिए. उसूल और आप कुरान से दीजिए बात करेंगे कि मैं कुरान का इम्प्लीमेंटेशन चाहता हूँ, मैं हदीस का इम्प्लीमेंटेशन चाहता हूँ, औरतों के लिए भी, मर्दों के लिए भी, सबके लिए बराबर. कुरान ने किसी इबादत में औरत और मर्द के बीच डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है. आप पैदा कर रहे हैं, आप पैदा कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं मालूम है. आप नाकाम हो गए, आप अपनी दुकान चलाने के लिए और आप लोगों को बदनाम कर रहे हैं, जिन्होंने कुरान की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं. आप इर्तिदाद के मुर्तकिब हो रहे हैं. कुरान और हदीस को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं. कुछ नहीं समझा. आपने अपनी दुकान समझी है, आपने अपनी दुकान समझा है कुरान को. आपने कुरान को अपनी दुकान समझ लिया है. नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक. आप लोग इस्लाम नहीं है, कुरान की आयत पे बैठे. आप लोग हिंदुस्तान के मुसलमानों को बर्बाद कर रहे हैं. लोग आपके फैसले हिंदुस्तानी मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं. आज तक आप ये दम पैदा नहीं हुआ कि आप इस्लामिक लॉ का कोडिफिकेशन करके दे देते. आप ये शर्म की बात है कि हमारी औरतों को अदालत में जाना पड़ रहा है. हमारी अदालतें हमारी मस्जिदों में है. हमारी औरतों को मस्जिदों में जाना चाहिए था. हमारी औरतों को मस्जिदों से इंसाफ मिलना चाहिए था. हमारी औरतों को हमेशा मस्जिदों से इंसाफ मिला है. आप जैसे लोगों ने जवाब दीजिए, मुझको तो नहीं आता है ना इस्लाम. अभी आप जवाब दीजिए. आपके पास कोई नॉलेज नहीं है. आप अपनी ईगो में आप बेचना चाहते हैं कुरान को. आप बेचना चाहते हैं, पूरे इस्लाम के फरमान को बदनाम कर रहे हैं. तस्लीम रहमानी साहब वेरी गुड. अल्लाह के फरमान को ठोकरा क्या बात कर रहे हो आप? इस्लाम के नाम पर तस्लीम रहमानी साहब वेरी गुड. ऐसा आलिम ये बात कहना चाहूंगा, आप इस लोग खप्पा है इस्लाम के नाम पर. फाइटिंग फॉर जो आप कुरान की बात करेंगे, कुरान ये कहता है कि औरतों को 5 मकान
मिलना चाहिए। बिल्कुल इस्लाम ने कभी औरतों को पीछे नहीं दिया, हमेशा आगे लाके रखा है। आप कैसे लोगों को सपोर्ट करने आ रहे हैं? 4 साल मौलाना साहब प्लीज आप समझिए, अभी भी वक्त है समझने के लिए। समझ जाइए, समझ जाइए, सिर्फ ये समझ जाइए। मैं सिर्फ ये कहूंगा आज, मैं सिर्फ ये कहूंगा आज, आप लोग 4 साल मैं सिर्फ ये कहूंगा, मुझे बताइए, आप अदालत को कीजिए वो दलील। मैं आपसे फिर कहता हूँ, मत जाइए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले का एहतराम कर लीजिए, कुरान की तरफ वापस लौट आइए। मैं आपसे फिर अपील कर रहा हूँ कि बिल्कुल कुरान की तरफ लौटिए। आपके मशवरे की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आप ऐसे लोग नहीं तो आप जाइए, अल्लाह ने तय कर लिया है, तय कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट से भी यही फैसला आने वाला है। मैं यही वार्न करना चाहता हूँ कि अगर आप गलत फैसले करेंगे तो इस्लाम बदनाम होगा, मुसलमान बदनाम होंगे। मुफ्ती ज़ियाई, अब सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात मुफ्ती ज़ियाई, सुनिए एक मिनट, तस्लीम नमानी, मुफ्ती ज़ियाई 1 मिनट, एक मिनट, अभी भी समय है मुफ्ती ज़ियाई, और अभी भी समय है इमाम इलियासी जी। आप सुनिए मेरी बात शांति से, देखिए मैंने इंटरप्ट नहीं किया पिछले 4 मिनट से, मगर मैं ये तो मशवरे के लिए कुरान और हदीस है अर्नब, देखिए, और हम उसी मशवरे पर चलेंगे जो मेरे पैगंबर ने दे दिया है, जो मेरे रसूल ने दे दिया है, जो मेरे कुरान नहीं, आप कुरान के खिलाफ कर रहे हैं, आप कुरान के खिलाफ हरकत कर रहे हैं। बिल्कुल कुरान मुझे एक आयत दिखाइए जिसमें औरतों को इबादत गाहों में जाने से रोका जा रहा हो। आप खुले तौर पर कुरान के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। आप वेल सेड नाउ, लाहौल वाला कुव्वत, आप ये कह रहे हैं कि मर्दों को, औरतों को मर्दों के बराबर नमाज पढ़ना चाहिए। लाहौल बिल्कुल आप कर रहे हैं, आप मुर्तकिब हैं बगावत के, बागी है आप इस्लाम के। मोहतरम रहमानी साहब, आप बताइए, आप मुझे पेश कीजिए। आपने पाबंदी लगाई है, मैंने नहीं लगाई पाबंदी, आपने लगाई है, आपने पाबंदी लगाई है, मैंने नहीं लगाई। आप पेश कीजिए, मुझे एक आयत पेश कीजिए जहां पर औरतों को रोका गया हो, एक आयत जिसमें औरतों को इबादत करने के लिए इबादत गाहों में जाने से रोका गया हो, उसका एक मिसाल पेश कीजिए। अपनी बनावट, अपने श्रृंगार दूसरों को दिखाने की इजाजत है इस्लाम के अंदर में। रहमानी साहब, अपने श्रृंगार दिखाने की इजाजत है इस्लाम के अंदर। कुरान के इबादत से जोड़िए, किसी के घर में जाने की इजाजत की जरूरत है या नहीं, आपको मालूम है? आप अल्फाज का लफ्जी, आप अल्फाज मत बदलिए, इबादत के सिलसिले में कुरान की आयत जो आप कोट कीजिए, इबादत के सिलसिले में इबादत गाहों में जाने की इजाजत दी है या नहीं दी है, नबी का उसवा कोट कीजिए, नबी का उसवा कोट कीजिए। आप कहाँ हैं? आप नबी का उसवा, कुरान मुकद्दस के सूरह नूर की 31 नंबर आयत आप नबी का उसवा बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ज़ीनत शौकत अली बैक ऑन द डिबेट। आज भी ज़ीनत शौकत अली देखिए, मौलाना साहब प्लीज मेहरबानी कीजिए, दुनिया भर की अल्लाह में जाती हैं औरतें नमाज पढ़ने के लिए, मौलाना जी जमात से नमाज पढ़ती हैं, मुफ्ती करके। अच्छा देखिए, अभी भी समय है इमाम इलियासी जी जरा 2 मिनट, अभी भी समय है, बदल जाइए, सुधर जाइए। लोग अभी सिर्फ ये औरतें नहीं हैं, ये सारे लोग आपके खिलाफ जवाब नहीं दिया है। आप इन लड़ाइयाँ तो जरूर कराएंगे, मगर मेरे सवाल का आपको जवाब देना होगा, आज नहीं तो कल देना होगा, आपको जवाब देना होगा। सवाल तो आपको दे चुका हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन चलता है कि शरिया आपने जवाब अभी कहाँ दिया है? शरिया आपने चलता तो है मेरी बात को कहा ही नहीं है। अगर नियम बदलने की बात आप कर रहे हैं, ये बात करके अगर नियम बदलना है तो तिरुपति का, अरे आपको मैं 50 बार भी बोलूं, सुनिए इमाम जी, सुनिए एक मिनट, तस्लीम रहमानी, आई कैन आंसर दिस मैन, सुनिए सबको, आप किसी एक को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक मिनट, तस्लीम रहमानी, आई कैन हैंडल हिम। तस्लीम रहमानी, यू नो प्रॉब्लम इज इमाम इलियासी जी और मुफ्ती ज़ियाई जी
आज ये समझ चुके हैं कि वो हार चुके हैं। उनमें इतनी भी समझ है कि उन्हें पता है कि आगे भी वो हारते रहेंगे। और नहीं हार है, आपके लिए हार है, बहुत बड़ी हार है। और आपको मैं कह रहा हूं, आप अगर सुधर नहीं जाएंगे, अपने ख्यालात नहीं बदलेंगे, औरतों का शोषण बंद नहीं करेंगे, ये कोई धर्म की ठेकेदारी बंद नहीं करेंगे, धर्म की ठेकेदारी नहीं करेंगे, ये गलत बात तो फिर आपको राहुल ईश्वर को, आप जैसे सब लोगों को, ये पंडित हो या मौलवी हो या मुफ्ती हो, आप सब आइसोलेट हो चुके हैं। बिल्कुल, आप माइनॉरिटी में हैं, आप अकेले पड़ चुके हैं। आज आपके धर्म के अंदर सुधार होने की जरूरत है, आपके ख्यालातों में सुधार होने की जरूरत है। मौलाना साहब प्लीज, आपको धार्मिक होना होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप अर्नब के साथ गलत बात कर रहे हैं। सुधार अपने माइंड में होना चाहिए मौलाना साहब। छोड़िए, आपके साथ तो मैं बहस ही नहीं कर रहा। आपको इस्लाम के बारे में क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मुझे क्यों नहीं करेंगे? नहीं, 1 सेकंड, क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आपको मैं कह रहा हूँ, आखिरी बार कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए इमाम जी। मैं नहीं, 1 सेकंड, ही इज द मोस्ट सेक्सिस्ट इन हिज ऑब्जर्वेशन। 1 मिनट। द प्रॉब्लम विद यू इज आप ये समझ, आप क्यों आज ऐसे बौखला गए, मैं आपको बताऊं। क्योंकि आपको लग रहा है कि इधर एक औरत है जो आपके नहीं, सुनिए, आपकी मानसिकता जो है ऐसी है। सुन लीजिए कि इधर एक औरत है। आप बदल देंगे क्या? मुझे ये हाँ या ना का जवाब दीजिए। सुनिए, आज आप फंस चुके हैं। आपके सवाल, आपके जवाब, मेरा सवाल, मेरा जवाब आपको। यू नो इमाम इलियासी जी, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? क्योंकि आप मेरे साथ मजहब के बारे में डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, आप मेरे साथ इस्लाम के बारे में डिस्कस करने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं आदमी हूं। क्योंकि सवाल नहीं, क्योंकि बिकॉज आई एम अ मैन। नहीं, you are willing to discuss anything with me because I am a man, and you are not willing to discuss anything with Zeenat Shaukat Ali because she's a woman. You are a chauvinist, you are a sexist, and you are unable to debate with her on issues of religion. You must respect her rights to debate with you on religion. Let there be an open debate between you and Zeenat Shaukat Ali on the issue of religion. I am reopening this debate. I am extending it by 5 minutes. I am extending it by. I'm extending the debate by 5 minutes, and let us prove tonight who knows more about religion, Zeenat Shaukat Ali, or for that matter, Imam Ilyasi. Imam Ilyasi believes that because he's a man, he knows more about religion. Zeenat Shaukat Ali knows about religion and comparative religion. I request you to make 1 point each. Now, आपके फैसले से आप फंस गए ना, अभी आप डिबेट कीजिए। Zeenat Shaukat Ali, सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया था? आप डिबेट कीजिए। सफा मरवा किसके नाम से दौड़ते हैं? Let there be an open debate. हाजरा के नाम से दौड़ते हैं। Viewers, I'm asking you. Viewers, मुझे अर्नब के सवाल का जवाब चाहिए। नियम बदलना चाहते हैं, नियम का जवाब जो सच्चाई है वो बताइए मुझको। मेरे पास 1 डजन सामने एग्जाम्पल्स है। हजरत ज़ैनब कौन थी? हजरत आयशा सिद्दीका कौन थी? जो क्या ये नियम रिलीजन जो है, इस पर हाँ या ना? जो रिलीजन का है वो हजरत आयशा सिद्दीका से आया है, वो औरत नहीं थी। वो बैटल ऑफ जमल में लीड नहीं करी बैटल। मुझे अर्नब से सवाल किया है, मुझे उसका जवाब चाहिए। मैं अभी और एडवाइस नहीं दिया हुदैबिया में। किसने एडवाइस दिया? जो हुदैबिया बना, हजरत हफ्सा थी। हजरत हफ्सा के पास पूरा कुरान शरीफ था। जब ये कुरान शरीफ का पब्लिकेशन हुआ, वो हजरत हफ्सा के पास जो पूरा कुरान शरीफ था, वो जो आप आज पढ़ रहे हो, तो आप औरतों की क्या बात कर रहे हो? हजरत ज़ैनब कौन थी? रसूल की लाइन में एजुकेशन था। रिप्लाई नहीं कर पा रहे, ब्लड में एजुकेशन था। Unable to reply. आपको एक पेपर बता रही हूँ, जब मुस्लिम विमेन साइंटिस्ट है मौलाना साहब, आप ही कीप क्वाइट फॉर अ मिनट। अरे ऐसे थोड़ी है भाई, जो मुस्लिम साइंटिस्ट है, जो मुस्लिम पॉलिटिशियन लेडीज है, आखिर दुनिया में है मौलाना साहब। ईरान जैसी जगह पे भी सबसे ज्यादा है। हो रही है, आप क्या बात कर रहे हो? को कोई मानने वाला नहीं है। सबसे पहले हजरत उमर फारूक, हजरत उमर फारूक जब उनको कौन करेक्ट किया? पढ़ने की छूट दी गई है। आप क्या बात कर रहे हो? मस्जिद में जो बयात दिए, जो बयात देते थे, उनको राहत दी गई है। और रिजवान पे और शारजा पे वो औरत थी, छूट दी गई है, जो बयात दी, और उसकी बयात में से वो अच्छा सुनिए, उसको क्या सिखाएंगे जो पॉलिटिकल
आपको किसने छूट दी? क्या सिखाएंगे मौलाना? नहीं, one second. just one. आप मुझको क्या सिखाएंगे? चाहती हैं आप उन्हें बाहर ले जाना चाहती हैं? औरतें अपने जो सच है वो सच है। आपने कभी किसको नहीं देखा है मौलाना साहब? Okay, I'm closing this debate. I'm closing this debate. It is quite clear. ये सिखाया है कि आप आगे बढ़ो, आप सच्चाई से चलो, आप इज्जत से चलो, आप रिस्पेक्ट से चलो, आप डिग्निटी से चलो, और कोई भी मर्द आपको झुका नहीं सकता है दुनिया में। आप समझे, कोई भी मर्द एक औरत को झुका नहीं सकता दुनिया में। और ये इस्लाम का कॉल है, ये सब इस्लाम का कॉल है, आपका कॉल नहीं है। आपकी बात इंसानियत, ये मुल्ला का इस्लाम है, अल्लाह का इस्लाम पढ़िए। और औरतों ये मुल्ला का इस्लाम आप सिखा रहे, अल्लाह का इस्लाम सिखाइए। मैं अल्लाह का इस्लाम सिखाती हूँ, आप मुल्ला का सिखाते हैं। आपको और मेरे में वो फर्क है मौलाना साहब। आप मुझको मत कहिए, आपका कोई हक नहीं है मुझको कुछ कहना। मैं आपको वो हक नहीं देती हूँ, मैं आपको वो हक नहीं देती हूँ। अपने इमामों Okay, I'm 1 second, viewers, 1 second. Imam Ilyasi, I allowed this debate to go on. I allowed this debate to go on for 5 minutes because I wanted to prove who knows more about religion. You have seen in this part of this debate, you 1 second, you have seen very clearly, viewers, you've seen very clearly that while Zeenat Shaukat Ali is raising matters of religion, Imam Ilyasi is only indulging in a personal attack. आपको किसने छूट दी? आप सवाल का जवाब देंगे। आप देखिए, आप अपना ओपिनियन बदलिए, अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू बदलिए, और आप ये शोषण बंद कीजिए। आपको बदलनी होगी। I thank you all for joining me on debate number 1 on the right to pray on the Newshour tonight. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you.